कोई डेस्टिनी नहीं है, कुछ लिखा नहीं है। तुम्हारे पास जिंदगी की हर एक सहूलियत है। तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, तुम्हें स्पोर्ट्स चाहिए, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तुम्हारे पास सब कुछ है इन अबंडेंस। अब सवाल यह है कि तुम इसका क्या करोगे। Hi everyone, welcome to Chalchitra Talks. मेरा नाम वाणी है and this is another of our guest episodes. Some time ago, Vaibhav and I had the opportunity to sit down with Ankur Warikoo, who needs no introduction. He's a YouTuber, author, entrepreneur, investor, and wears a lot many more hats in addition to that. If you're new to the channel, Chalchitra Talks is a recommendation-based platform. We talk about movies, music, books, podcasts, TV shows, anything that the umbrella of art entails. हम बहुत close हैं 1 lakh subscriber mark hit करने के लिए, so do subscribe to the channel. And without further await, let's just jump right in. So Ankur, I've seen a lot of your videos and I got a lot of great non-fiction recommendations also. But I want to ask you, what is your relationship with fiction? Do you read fiction? And if so, what's your favorite fiction book? I don't read fiction and I don't know whether that makes me ineligible to have this conversation anymore. But मैंने of course शुरुआत तो fiction से ही करी थी because सब वही करते हैं. So fiction in those times was comic books, चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, then matured to Archie's, read Enid Blyton's and all those usual kiddie stuff. And then when I got to reading actual books, I remember Tuesdays with Maury was a brilliant book that I read several years back. But the one book जिसने मेरे ऊपर बहुत बड़ी एक छाप छोड़ दी, और उसके बाद वो सूरदास की कहानी है ना, जब सूरदास लॉर्ड कृष्णा को देख लेते हैं तो वो बोलते हैं कि अब मैं जिंदगी में और कुछ नहीं देखना चाहता, तो मेरी आंखें ले लो. तो मेरे साथ वो किताब के साथ हुआ. सो आई रेड द फाउंटेन हेड एंड आई वाज लाइक, बस हो गया, फाउंटेन हेड पढ़ ली है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट फिक्शन आई विल एवर रीड, आई डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दैट. तो मैं उसके बाद रुक गया एंड आई फ्रैंकली हैव नॉट रेड एनी फिक्शन आफ्टर फाउंटेन हेड, व्हिच वाज when I was 21. Interesting. Vaani was saying कि यार मैं like because we also follow your channel and हम आपकी reels भी देखते हैं, shorts भी देखते हैं, on every platform we follow, but like हमें तो यार fiction जाननी है हमें, so we were like we'll start with this question. I think हम सभी fiction से start करते हैं and I remember this fascinating thing जहाँ friend of mine had once said कि there is no fiction in the world. जो हमें लगता है फिक्शन है वो भी रियल लाइफ से ही कहीं इंस्पायर्ड है. एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन लेट्स से our best authors in India, whether it's Shakuntala Devi or Premchand, all of whom are considered to be prolific fiction writers, their only way of sharing what they knew under a British rule was to disguise reality in fiction. I think कुछ दिन पहले Vaibhav also sent me this tweet related to the movie Mean Girls, which said that Mean Girls is the best lesson in terms of psychology, I think. We recently saw, अभी आपने कल जो AMA किया था जहाँ पे आपने बताया Nicholas Taleb is your favorite writer if you have to name one. Which is your favorite Nicholas Taleb book? It would be Anti-Fragile. That book just completely made me go crazy. A very close second will be Skin in the Game. अगर मैं recommend करता हूँ लोगों को तो I would say Skin in the Game because that's slightly easier to absorb. Anti-Fragile बहुत deep है and बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है उसको समझने में एंड टू कॉम्प्रिहेंड दैट. मुझे तो कम से कम बहुत टाइम लगा था. What is Anti-Fragile exactly about? So Anti-Fragile, वैभव, is about this concept कि हमें लगता है कि जब चीजें टूटती हैं या बिखरती हैं तो वो कमजोर होती हैं. And Anti-Fragile is this concept कि there are some things in the world जब उनको तोड़ा जाता है या जब वो बिखर जाती हैं, they actually become more powerful. If you can build an anti-fragile system or see the world through the lens of fragile and anti-fragile, you actually have a far deeper understanding of how the world functions. A simple example of that would be a virus attack becomes stronger the more it can break down into smaller parts and disseminate in the entire host, whatever the host is. And that makes the entire system of
a virus anti-fragile and thus draw power from that. There are multiple such things. I wouldn't go into the depth of it क्योंकि फिर बहुत technical हो जाता है. But this is the main summary of it. मैंने उनकी ब्लैक स्वॉन और स्किन इन द गेम पढ़ी है, मैंने एंटी फ्रेजाइल नहीं पढ़ी हुई, तो इसलिए आई वाज लाइक वेरी क्यूरियस टू नो. एंड लाइक ही इज सच अ यूनिक पर्सनालिटी. अगर आप उनको ट्विटर पे भी देखो, उनका यूट्यूब चैनल भी है, बहुत फैसिनेटिंग यूट्यूब चैनल है उनका, जहाँ पे वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं. I think he's a true teacher. मतलब उनको पढ़ाने में हाँ genuinely मजा आता है. Of course वो काफी गुस्सा भी हो जाते हैं अगर उसके स्टूडेंट ढंग से पेश नहीं आते. बुक्स के अलावा what are the other sources of written material that you follow? There are a few things that I used to consume पहले. अब I go back to them, but I haven't added anything significantly more to that. तो एक Morgan Housel, who is the author of Psychology of Money, he writes blogs on the collaborative fund, which is what he's a part of, and I love all his essays. They're not very long, but they're very, very thought-provoking. One of the earliest essays जो मुझे बहुत पसंद आए थे and it helped me immensely was Paul Graham, who is the founder of Y Combinator. He has written best repertoire of knowledge that an entrepreneur would need to be successful, to be aware, to be knowledgeable, to be winning it. And all of those are there on his website. तो वो मैंने like literally चाट के पढ़ा था, बार उसमें जाता था. Every time I used to go, I used to realize something new that hadn't struck me when I read it for the first time. So that's the power, I think, of good written content. कि हर बार जब कुछ पढ़ते हो तो कुछ नया ही सीखने के लिए मिलता है, almost as if it's a new essay altogether. Before he wrote the book, James Clear, Atomic Habits, वो Medium पे बहुत active थे, and he used to write brilliant essays. तो मैं Medium पे उनको बहुत follow करता था. So I've been a fan of his work and his writing for a much longer time. Then he became popular because of Atomic Habits, rightfully so and deservingly so. I love reading the newspaper, so I'm still old in that sense. रोज सुबह मेरी शुरुआत न्यूज़पेपर से होनी चाहिए. मैं हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता हूँ और इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूँ. आई डोंट थिंक न्यूज़पेपर के अलावा कुछ भी ऐसा है जो मैं रोज डेली कंज्यूम करता हूँगा, बुक्स के अलावा. ऑफ कोर्स यू मेंशन पॉल ग्राहम से मेरे को याद है उनका एक आर्टिकल है, डू थिंग्स दैट डू नॉट स्केल. I am in no position to say so, but if there is any Nobel Prize equivalent in startups, he should get that for this. And like a very close associate of Paul Graham, जिनका एक आर्टिकल है, मैं मेरी कोर टीम मीटिंग्स में पढ़ाता हूँ, the Sam Altman article on how to be successful. There's this one thing where he says कि every next thing that you do in life, उसको ऐसे करो that the rest of your life looks like a footnote. And correct. That is basically motto हो सकता है life का. It's like do epic shit level kind of a thing. Are there any particular pointers also that you have for people who, especially in the beginning, say sometimes you put in a lot of effort in something and जब वो नहीं हो पाता तो it really pulls you down. Are there particular essays that you would recommend to somebody who's struggling with that particular thing in the niche? I don't think essays, but I feel that there are so many beautiful reminders for people to just go through the journey irrespective of how hard it is. I also feel that comics such as Dilbert, Snoop Dogg, they do such a wonderful job of simplifying what is essentially a very complex thing in life. जैसे मुझे याद है Snoop Dogg का एक comic which I always remember, which is them sitting on this bench staring into the vast infinity, and he says, hey, one day we're going to die. And then he says, you know what, but until then every day we will live. And that is just so powerful and so liberating in some sense कि हाँ यार, या तो अपनी मौत के बारे में बात कर लो और उसके बारे में गम मना लो, या दी असलियत की तुम्हारी जिंदगी हर रोज फिर से शुरू होती है and you have the choice to live. I don't think any particular essay, I can't think of that. Songs, yes, a lot of them. Which ones? लेकिन nothing in written form. तो songs की best चीज ये होती है, unlike written content, that they are very intrinsically attached to your memory. Depending on when that song was first heard, what was it that you were going through back then, it just brings you back to that struggle. So I remember 2009, which was my time when I had exited my first startup. I was thinking about what next to do. I had spent 3 months figuring things out. Nothing was really working out. I wasn't sure of where I'm headed. I'd recently got married. So at 29, no job, no money,
no sense of direction, but still wanting to make it happen. And I used to go back to this song Lose Yourself by Eminem, 8 Mile. And उस गाने में एक पंक्ति है which says success is your only motherfucking option, failure is not. That line जब भी मैं उसको सुनता हूँ और खासकर Eminem की आवाज में सुनता हूँ तो it is inevitable कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, and it will just bring me back to that moment, because 8 Mile was released in 2003, which is when I was in the US as a student and I was struggling to make sense of where my life was headed. And I was in a PhD program, which is what I wanted to do all my life. I was doing well in it, but it was very clear कि मुझे मजा नहीं आ रहा था, मैं इस चीज को करने में खुश नहीं होऊंगा. That struggling period when nobody around me understood what I was going through, I had to make myself wake up and fight whatever it was. So I remember watching 8 Mile on the screen. मैं मिशिगन में पढ़ता था. डिट्रॉइट जहां 8 Mile शूट हुई है वो मुझसे कुछ 2 घंटे दूरी था, तो मैं डिट्रॉइट गया हुआ था. तो it was almost like that movie was telling me कि बॉस जिंदगी खत्म नहीं हुई है, तुम अभी जहां भी हो, there is a lot more to achieve and to do, and just get up, and success is your only X option, failure is not. And that's why that song just brings me back into that goosebumpy ride. So many more, but that is one song will always stands out. And songs के अलावा which are the things that you go back to when you want to look for that motivation? जब भी लगता है कि यार like I need just that like quick dose of एक यार हाँ, this is why I do this. उसके लिए what are the things that you go back to? The honest answer is I go back to myself. The reality that I live in is I know I can do anything that I set my mind to. The question is, do I set my mind to it or not? And that is the constant struggle and my constant hope. Because मुझे पता है कि कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे decide करना पड़ेगा कि मुझे ये करना है. And that is a step in the right direction. It's a step from all the options that I have, whatever the case may be. So I go inward, which is why one of my interview questions, so and this has been for almost 10 years now, we had a very different hiring process at Groupon, Nearbuy, and even now in my startup that I'm running. जहाँ जब भी कोई apply करता है, बिना उनसे उनका resume मांगे, उनका experience के बारे में बात किए हुए, whatever the case is, we send them a list of 20 questions. And these 20 questions have nothing to do with their work. It is all to do with their personality, their individuality, their experience in life. तो उसमें से एक सवाल है, if you are down, if you're feeling low, do you prefer staying alone or do you prefer staying with people? And it's just a very simple question with no right or wrong answer. So people may choose to be around people, people may choose to be alone. I gravitate towards being alone. I love my company. I love my company. So whenever I'm down, whenever I'm low, I rarely discuss it with anybody, including my closest people, my family or anybody. I just discuss it with myself. And अगर पता चल जाता है कि next step क्या है, then I just have to take that next step because I know I can take it. I can take any step that I want. आपने जो ये चीजें बताई इसके बाद ना I want to get to the usual suspects वाले जो हमारे क्वेश्चन है ना, तो आप टिम फेरिस के बारे में तो सब जानते ही होंगे, लेकिन उनका एक क्वेश्चन है जो मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, that question where he asks people which is that one thing you would recommend to people for less than $100. तो हम यहाँ पे सबसे पूछते हैं 10,000 रुपए से कम की एक चीज बताइए जो आपको लगता है एक वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट है फॉर एवरी पर्सन. मैं रीसेंसी बायस से ये जवाब दूंगा क्योंकि ये रिसेंटली हमने खरीदा है एंड इट हैज बीन सो अमेजिंग. हम अभी पौंडीचेरी गए थे अपनी टीम ऑफ साइट के लिए और वहां फिर हम ऑरोविल गए विच इज ग्रेट प्लेस टू बी. एंड ऑरोविल में ना एक सेंटर है कॉल्ड स्वरम, एंड स्वरम इज दिस प्लेस जहां म्यूजिक के बारे में रिसर्च होता है. So there are people who make musical instruments. There are of course the music students and general जनता जो भी वहाँ ऑरोविल आती है, स्वरम आती है, तो उनको म्यूजिक के बारे में कुछ बताया जाता है. तो वहां से हमने एक विंड चाइम लिया है और वो विंड चाइम इतना खूबसूरत है वैभव, इतना खूबसूरत है वानी, आई कैन नॉट इवन बिगिन टू टेल यू. वो हमने अपनी बैल्कनी में लगाया हुआ है. हम 13वें मंजिल पे रहते हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ एयर and we don't have anything in front, we don't have anything in back, so it's like this vast empty space. It just sounds unbelievably therapeutic the entire day. Like 24 घंटे we're just listening to wind chimes as the most definitive noise or voice or sound in our vicinity, which is breathtaking. And I wish people could experience that
every single hour of their life. क्या वो विंड चाइम हमें सिर्फ ऑरोविल के पास ही मिलेगा? Amazon पे नहीं मिल सकता? नहीं, आप कहीं से भी ले सकते हैं. The only thing is, this is maybe a fake reason to believe because I have the buyer's syndrome. कि the way that it's built and the material that they use, उसकी जो frequency है ना, it is far deeper when you hear those vibrations. बाकी wind chime आपको बहुत मिल जाएंगे, like जयपुर में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, it's dime a dozen everywhere. पर वो ना वो पतली सी hollow pipes होती हैं जहाँ वो टिंग बज जाता है, which is like ये ऐसे हो जाएगा. But it's not like that vibrating वाला डोंग जो नहीं होता, डोंग बजता रहता है. That thing would be missing. पर ऑरोविल जाने की जरूरत नहीं है, किसी अच्छे विंड चाइम वाले को ढूंढ के खरीद लीजिएगा. I remember I was very young. I think I was in my early teens, and one of my relatives had just bought a wind chime, and she was showing off कि इसकी आवाज़ सुनो कितनी अच्छी है. I was like, हाँ ठीक है, अच्छी है. But it was genuinely nice, and I thought I want one for my room as well. And since then I've been searching for the perfect wind chime, but मुझे आज तक नहीं मिला. You have to make the trip to Auroville then. Yeah. That is what it is. वहाँ आपका wind chime आपका wait कर रहा है. This also reminds me, like मैंने जब Beer Biceps के साथ ये episode किया था, and I asked him this question, his answer was scented candles, like a thing that like he's really into. Are you also into scented candles? No, not so much. We use them when there are people over. Yeah. But I love fragrances in general. तो हमारे वॉशरूम में we have diffusers, which are these वो lead diffuser होते हैं. तो वो हर में है, because I genuinely just like कि अच्छी सी महक हो, and there is this nice happy thing. I'm also very different from my wife. I have been using the same perfume for the last, I think, 15 years of my life, and she doesn't get it because she likes using a new perfume every day. So she has a bouquet of 7-8 perfumes. तो मुझे association से बहुत प्यार है. मुझे ऐसा लगता है कि humans are animals of association, and if you can get yourself associated with a certain theme, a certain product, a certain name, a certain smell, a certain way of conduct, then that begins to supersede everything that you do. A lot of people ask me कि ये पोस्टर क्या कर रहा था. मैं बताया ये पोस्टर इसलिए था क्योंकि मुझे पता था कि ये किताब आने वाली है. तो 1 साल पहले से ये पोस्टर मेरे YouTube वीडियो में छपना शुरू हो गया था, एंड इट वाज नॉट अ सरप्राइज देन कि जब किताब आई तो लोगों को पता था कि डू एपिक शिट अंकुर वारिकू की हो सकती है, क्योंकि और किसी ने ये बोला नहीं है, अगर बोला भी है तो इतनी बार नहीं बोला है. तो उनके जहन में बस गया था दैट एवरी वीक 3 वीडियोस विद दिस फ्रेम इज जस्ट कॉग्निटिव repetition that then gets into association, and the next thing you know that becomes in some way your identity. अभी ट्विटर पे एक tweet viral हुआ था where a transgender person in the US would click this photograph of toilets where it said male, do epic shit, female, smile, you're getting pretty, something. I don't remember specifically what it was. And she had said, she refers herself as she had said, I am terrified. Because clearly she doesn't know where to go. But what was funny was people were tagging me in that photograph. And it's like, it has nothing to do with that. मतलब वो बिल्कुल अलग है. वो कोई और ही discussion चल रही है. But that's the power of association. It transcends even common sense at times. आपने जैसे power of association की बात की, one thing that I am really into is like, बहुत लोग वीकनेस भी बोलते हैं, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद नॉस्टैल्जिया. लाइक डू यू थिंक, मतलब आई एम इनहेरेंटली नॉस्टैल्जिक एंड आई लाइक टू यूज इट एज अ स्ट्रेंथ. मैं जान के टेक्सचर्स याद करने की कोशिश करता हूँ, चीजें याद करने की कोशिश करता हूँ, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रिलेट टू इट, क्योंकि लोग कहते हैं कि आगे बढ़ना है तो पीछे का सब भूलना पड़ता है. सो जस्ट वांट टू नो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट नॉस्टैल्जिया. I think nostalgia is a very, very powerful tool to remain clued into who you are inherently. The truth is कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, we begin to forget who we truly are, because हम एक समाज का रूप धारण कर लेते हैं. समाज हमें चाहता है कि हम we go to this college, we get these many marks, we get this job, we start earning this much, we drive this car, blah blah blah, and we lose a sense of individuality that we did have when we were kids, whatever that was. It becomes toxic if you use that as a reason for not wanting to change. Right. So nice. if you
not you, but if anybody says, nahi yaar, main to aisa hi hu, then that is a limiting mindset. It's a fixed mindset because you are boxing yourself to all your past experiences and determining your future capability based on that. But if someone says, मैं यहां से आया था तो मैं इस चीज को कभी भूल नहीं सकता, that can easily become a strength if they use this as a strength item. So it frankly becomes a choice. And I'd argue for artistic individuals, and I would assume that you call yourself in that category, nostalgia acts as a very powerful way of remaining glued to your art and to the ways that you would want to exhibit that art to the world. How about you? Like, आप कैसे nostalgia को use करते हैं अपनी life में? I am a very nostalgic person in the sense कि मैं यादों को हमेशा संभाल के रखने की कोशिश करता हूँ. तो मुझे याद है, I would have things like मेरी स्कूल में डायरी, मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म का वो 12th का जो स्क्रिबलिंग डे होता था वो पड़ा हुआ है, वो पहली घड़ी पड़ी हुई है, वो फोटो पड़ी हुई है जहां मैंने पहले टाई पहनी थी. Like it's just this accumulation of things and things, and it transcends into even my content creation, where I maintain a blog which is not something that a lot of people know. It's a blog that I've been writing for 17 years now. Wow. Every single day. I started it in 2005 when I was a business school student at the Indian School of Business, and I started it saying, boss, itna kuch ho raha hai zindagi mein, so I want to document that. And that is still live and available for anybody to see, including myself. So April 2005, I think, was the first blog post that I made. And when I look at that blog post, I'm like, ye kaun gada hai? कैसी बातें कर रहा है, कैसे अंग्रेजी में लिख रहा है, कैसा इल स्ट्रक्चर्ड है, कितने ग्रामेटिकल एरर्स हैं, ना सर ना पैर, ना कोई स्टार्ट, ना कोई फिनिश, ना कोई ऑर्केस्ट्रा, ना कोई सिम्फनी. इट्स लिटरली लाइक वॉमिटिंग वर्ड्स. बट आई वुडंट एवर डिलीट दैट बिकॉज it is just symbolic of how far I've come along. इस ब्लॉग का नाम क्या है? What's the URL for this? हम कहाँ पढ़ सकते हैं? ankurwarikoo.com/blog. Nice. That's it. आपने ये वाली जो चीज बोली, द डायरी दैट यू हैव, लाइक द शर्ट, सेम चीज है मेरे पास. और मेरे घर पे जब कोई पुरानी बुक्स मम्मा जब कभी रद्दी में देने की कोशिश करती है, मैं कहता हूँ क्यों दे रहे हो रद्दी में? कल नेटफ्लिक्स जब मेरे पे डॉक्यूमेंट्री बनाने आएगा तो you know, like every time there is a documentary they are making, you need that, like all those stuff ना. पहली डायरी, पहली शर्ट. तो मैंने कहा कुछ भी मत फेंको, अभी डॉक्यूमेंट्री बनेगी. So I think it's very important to archive. It's a tragedy हुई थी. I used to maintain a diary during my school days. One was the normal diary जो सबके पास होती है, like dear diary. Yeah. I hope my parents never discover this. And then कुछ अपना लिख दिया. And then the other one, because I was a geek and I still am to a great extent, I used to actually record my dincharya. Every single hour of my day was recorded on a notebook. सुबह 7 बजे उठा, फिर मैंने ब्रश किया, फिर मैं टॉयलेट गया, फिर मैंने नहाया, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैं कॉलेज गया, ब्ला ब्ला ब्ला. वो सारी किताबें भर भर के जिंदगी भर. But as luck would have it, typical Indian thing, वो दीमक ने खा ली तो अब सब खत्म हो गया. हर जने की लाइफ में एक मोमेंट आता है जब लाइक चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं. मैं जिसको बोलता हूँ BC to AD मोमेंट, जब कैलेंडर रीस्टार्ट हो जाता है. So what was that BC to AD moment of your life when the calendar restarted? Number one was when I went to the US. When I went to the US, that was the first time I realized what is the power of an individual. हिंदुस्तान एक बहुत ही faith driven country है, जहां ये माना जाता है कि अगर आप अच्छे इंसान हो और आप झूठ नहीं बोलते हो, आप चोरी चकारी नहीं करते हो, मार धाड़ नहीं करते हो, आप किसी का खून नहीं करते हो, तो आपके साथ जिंदगी में अच्छी चीजें होंगी. And then I went to the US, which was like ये सब बकवास है. कोई डेस्टिनी नहीं है, कुछ लिखा नहीं है. तुम्हारे पास जिंदगी की हर एक सहूलियत है. तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, तुम्हें स्पोर्ट्स चाहिए, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तुम्हारे पास सब कुछ है इन अबंडेंस. अब सवाल ये है कि तुम इसका क्या करोगे. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम द डेमोक्रेसी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकेम एविडेंट टू मी. बिकॉज इन इंडिया इट वाज मोर लाइक स्टडी हार्ड, बी अ नाइस किड, be obedient, be respectful,
and nice things will happen to you. But they didn't happen to me, and they don't happen to a lot of people. It's not that people don't work hard, but shit happens. And then you go to a different culture, which is like, nobody's going to spoon feed you. Nobody's going to tell you what you can do. We're going to give you everything that you need, literally everything that you need. Now the question is, what do you do of it? And that just blew my mind. It just blew my mind. And at the age of 22, I think that was the best thing that I could have asked for, because it just exposed me to a whole new way of thinking, a whole new way of knowing my own self in a way that I had never. इसलिए मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि अगर possible है, तो please कुछ साल ना बाहर जाके पढ़ो. काम करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ बाहर जाके पढ़ो. Because you will just get so much about your own self that you do not know as yet, that you wouldn't get through any other experience. So that's one. The second one was going to ISB. क्योंकि उस एक साल ने मुझे, I think, inarguably सबसे smart collective में छोड़ दिया. People from all across the country and achievers, IIT gold medalists, वो army में major colonel, वो doctor, वो lawyer. मैं कुछ नहीं, drop out from PhD, एक साल का experience, कोई idea नहीं है. So I was bottom of the pyramid. And I loved the fact that I was bottom of the pyramid because I only had to absorb. I had nothing to give. I literally could not give anything to anybody, even if I wanted to. So the only thing that I could do was just be like, हाँ, बोलो, बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ. And I learned so much. And that was also the time I realized that I had a few things in me that work for me that seem like work for others, but is play for me. It's very easy for me. Storytelling is very easy for me. Connecting with people and listening to them in a way that they feel heard is very easy for me. So I realized that just because I am not one of the most academic individuals getting the top grades and getting the best job does not necessarily mean I will not win it at life, because something constantly kept telling me कि एक पॉइंट के बाद ना आपके स्किल्स आपको सिर्फ जिंदगी में वहीं तक ले जा सकते हैं जहां वो स्किल्स ले जा पाएंगे. उसके बाद it is always about people. Every job eventually becomes about people. It doesn't matter what you're doing. You could be a doctor, you could be the Prime Minister, President of India, you could be an army major, or you could be a physician or an engineer or anybody else. Eventually every role becomes about people. And अगर आपको लोगों से डील करना आता है, लोगों को समझना आता है, लोग आपको समझ सकते हैं, लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं, then you have something that might work for you. And जैसे आपने mention कि you always liked storytelling, did you always were also very comfortable with speaking? Like हमेशा से आप इतने articulate थे या आपको इस पे मेहनत करनी पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं यार. तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस दोहराता हूँ. मेरा पहला एक्सपीरियंस था शायद क्लास 7 या 8 में. वो स्कूल में एजुकेशन कॉन्टेस्ट होता है ना, ऐसे खड़े होके स्टेज पे जाके कुछ बड़बड़ाना होता है. पता नहीं एक तो ये क्यों करते हैं, आज तक किसी ने बताया कि इसका क्या मतलब है. मैं लगता था एक हाथ दूसरे हाथ को बस सांत्वना दे रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला. सो माय टीचर somehow thought that I would be a good fit for it, so she sent me on stage and I was terrified. I did not want to be on stage ever. मुझे बिल्कुल स्टेज पसंद नहीं था. And then I go on stage, मुझे याद भी नहीं मुझे क्या बोलना था. पूरा स्कूल सामने, and I was like, भाड़ में जाए, मैं बस बड़बड़ा दूंगा और खत्म हो जाएगा. मैं बस बोल देता हूँ जो मुझे बोलना है, खत्म. एंड जब वो खत्म होता है ना, देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस. कोई कुछ नहीं ना बोल रहा है, ना कोई रिएक्शन है. एंड देन आई गेट ऑफ एंड लाइक, आई डोंट केयर, आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट दिस एक्सपीरियंस इज ओवर. आई गो बैक, आई सिट विद माय फ्रेंड, एंड देन माय फ्रेंड इज लाइक, बॉस ये क्या था? इज लाइक, तू स्टेज पे गया, तेरा मुंह चलने लगा, पर तेरे मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी, और 2 मिनट तक तेरा मुंह चलता रहा, लेकिन उससे एक आवाज नहीं आई. So everything that I was saying was just in my head. I didn't even say it out loud. That was my first experience on stage. And I swore that day कि मैं अब जिंदगी में कभी स्टेज पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्यों ही जाऊं, like इससे मुझे क्या मिल गया ऐसा. And yeah, that was me. So I was terrified, very shy, very scared. And everything that you see today is just 20 years in the making. आपके सारे थॉट्स के अंदर हमें ऐसे 5 सेकंड का पॉज लेना पड़ रहा है. ओके, लेट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं.
नाइस सो इसलिए मैं चाहूंगा वानी जब तक मैं एब्जॉर्ब करता हूँ कुछ पूछ. How did you work on making yourself more coherent? I think the biggest thing that has helped me, which would help anybody in my opinion, is writing. Here is the thing about writing, which is true, but unfortunately the generation that all of you are being raised in is not being able to fully appreciate it for no fault of yours. So writing is the slowest form of expression. आप बोलते हैं तो आप तेजी से बोल सकते हैं. सोचना सबसे फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है. सुनना भी आसान होता है, देखना भी आसान होता है. लेकिन जब आप लिखते हैं, then it takes time because you are determined by the pace of what you're writing. What happens because of that is all the thoughts in your head who are begging for you to express them have to in some way slow down. They have no choice. So दिमाग में तो वो एकदम जद्दोजहद चल रही होगी, एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, मैं अंकुर मैं. लेकिन जब आप लिख रहे होंगे, you have no choice but to express one thought at a time. If you do it over a prolonged period of time, trains you on how to structure your thoughts. And unfortunately today, kids are not writing. They're typing, which is far faster than writing. They're unfortunately also typing in ways that is shorthand. So TY and fire and emoticons and all of those are making it harder and harder for them. So what they're essentially doing is, जितनी तेजी से दिमाग में सोच आ रही है, लगभग उसी तेजी से वो लिख भी पा रहे हैं. So they are never being able to channelize their thoughts. And that is really unfortunate. It is scary because we are now entering a world where people will be chaotic in their mind and they would not have any mechanism to distill that information and express it in a manner which is coherent. And that's why I say it is so easy to win in this world today. क्योंकि all you need to do is just be a clear communicator. आप clarity से सोच सकते हैं, आप clarity से बोल सकते हैं, आप clarity से सुन सकते हैं, will put you in the 0.0001% of the world's population. But आज की डेट में जैसे इतने सारे like thought leaders हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं और जिनकी किताबें पढ़ सकते हैं, जिसके थ्रू हम ये सारी skills better कर सकते हैं. Who are those few thought leaders that you really look up to? जिनको देख के लगता है आपको, जो आपने बताया 20 years in the making है, जो भी आपने Elocution Night से देखा, Elocution Day से देखा. So who are the thought leaders that have really influenced you over all these years? Several of them. If I were to name a few, Naval Ravikant, definitely someone who has influenced a lot of my thinking. I followed him for a really, really long time. Not just his current avatar of a Twitter celebrity, but from his days of early Angel List, e-opinions, and so on. There is a guy called Jordan Peterson. I admire him a lot because I think he's one of the most articulate people that I know of. And he does a commendable job of expressing what is in his head. And he's not always making sense, but it's admirable how effectively he communicates what his ideas are. I love the thoughts of the Dalai Lama. मतलब वो मेरे लिए जीता जाता विंड चाइम है. उनसे सिर्फ ट्रैंक्विलिटी ही झलकती है. Whatever he says, the way he says it, the conduct is just blissful. I admire multiple people who have gone on to share their stories, but I don't know of them as such, nor do I follow them actively. So there is Gautam Buddha, who's, I wouldn't call religion, but just everything that he has experienced and thus shared with the world is amazing. And I absolutely love his ideologies. The entire Stoic community, Seneca ho gaye, who is, at least to me, the biggest one of them, love his work. Poets mein Rumi ho gaye, who's so incredible. Khalil Gibran ho gaye, who is just so incredible. So there are lots of people jinke just words and thoughts and meaning adds a lot of value. I may not actively follow them, but I always go back to them whenever I feel like I need to. जो आपने अभी एक बात बोली कि हम 0.001% में आ सकते हैं if we are a clear communicator and अगर हम हमारी communication skills पे काम करें. मेरा एक डर ये है कि
अगर आप मान लीजिए अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हैं, लेट्स से एनी पर्सन इफ दे बिकम अ गुड कम्युनिकेटर एंड पीपल स्टार्ट बाइंग व्हाट यू आर सेइंग, राइट, कि लोग विश्वास करने लग गए क्या होगा, बट क्या उसमें हमेशा सच्चाई है? बिकॉज दैट रिमाइंड्स मी ऑफ वन थिंग वानी वंस सेड इन अ पॉडकास्ट कि जब कोई तेज बोल रहा हो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो पते की बात कर रहे हैं, राइट? इट डजंट मीन इफ समवन इज लाउड दे आर सेइंग द राइट थिंग। और आज की डेट में देयर इज लाइक एन एपिडेमिक ऑफ थॉट लीडर्स आउट देयर, हर जने का यूट्यूब चैनल है और उन्होंने अपनी सबने अलग टारगेट ऑडियंस ढूंढ लिया है। व्हाट कॉशंस कैन लाइक अ पर्सन इन ऑडियंस टेक की टू नो कि भाई शायद ये चीज सही नहीं है? क्योंकि जब कोई क्लियरली बात करता है तो हमें लगता है यार बात तो सही कर रहा है, लाइक बट हाउ कैन आई डिस्टिंग्विश बिटवीन समवन हु इज ऑथेंटिक देयर एंड इनऑथेंटिक? तो वो क्या चीजें हो सकती हैं जिससे समवन कैन come to that realization? The nature of communication or the delivery style cannot be a measure of authenticity, क्योंकि वो तो बहुत ही superficial fake barometer हो गया. The measure of authenticity will have to be your own self reflection. अगर आप किसी की बात को सिर्फ इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर है और इस ढंग से बोल रहा है कि आपको पसंद आता है, then you are following a cult. You're not following something which is a objective reason to comprehend and follow them. So I often say this, that you shouldn't look down upon people who are able to gather a community because of who they are, because people are making their own active choices. हिंदुस्तान में अगर आप टेलीविजन मीडिया को देखेंगे, हर एक तरीके के जर्नलिस्ट हैं. जर्नलिस्ट जो तहजीब से बात करते हैं, जर्नलिज्म जिसमें तहजीब वर्ड दूर दूर तक नहीं दिखती है, and everything in between. And people will self-select. People will self-select. And that's perfectly fine. It's their choice. They're all adults. आप उस पे कुछ वार नहीं कर सकते. Just because आप तहजीब से बोलते हैं, you can never look down upon someone who doesn't with that same level of politeness. Because you have made a conscious choice to be that person. That person has made a conscious choice to be that person. And people have made a conscious choice to follow whosoever they wish to follow. The only thing that as an individual you can answer is, why am I following this person? Why do I listen to this person? Why do I believe this person? And if the answer is subjective, non-objective, which is कि मुझे पसंद है, मुझे इसकी बातों में विश्वास है, मुझे इंसान भला लगता है, मुझे लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, then you're essentially falling in a trap which is blind faith. But if you have a logical reason of why you follow this person, and you also see them for all their inadequacies and their inefficiencies and their misgivings, then that makes for objective reason. तो मेरे लिए, for example, बहुत ऐसे followers होते हैं जो बोलते हैं आपकी बातें हमें पसंद आती हैं, लेकिन ये बात आपने गलत बोली थी. एंड मुझे पता है कि ये जो इंसान है ना, ये मुझे सही मायने से फॉलो कर रहा है, क्योंकि कल को अगर मैं अनछट बोलना शुरू कर दूं और कुछ भी बोलना शुरू कर दूं क्योंकि वो मेरे लिए काम करता है लेकिन दुनिया के लिए नहीं, ये इंसान सबसे पहले खड़े होके बोलेगा ये झूठ बोल रहा है. दैट फॉर मी इज द राइट काइंड ऑफ इंडिविजुअल, बट आई कांट कंट्रोल दैट. You also mentioned that आप यूएस में आपने पढ़ाई की है, like and you recommended कि हर जने को वहां जाके पढ़ना चाहिए. आपने अपने ऑरोविल के एक्सपीरियंस के बारे में बताया. Which are those few places जो आपको travel जहाँ पे आपने किया and like that stayed with you, or like any travel recommendations that you would have कि अगर यार मौका मिले ना यहाँ तो जाके ही आना? हिंदुस्तान में there are a few places where we go frequently and there are a few places that I like. जैसे मैं लेह और लद्दाख गया था, मेरा दिमाग ही खराब हो गया. मतलब ये कौन सी ये क्या है, ये जगह कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? लाइक इट वाज अनबिलीवेबल, इट वाज सो सरियल, इट वाज अ होल न्यू एक्सपीरियंस. तो दिल्ली से थोड़ा सा दूर है, सो आई एनवी यू वानी की चंडीगढ़ से आप कभी भी जा सकती हैं. वानी तो है ही हिमाचल से, शी इज फ्रॉम मंडी. ओह अरे वाह, राइट. तो देन फिर क्या एनवी, मतलब क्या ही बोल रहा हूँ मैं. तो आई लव हिमाचल के फॉरेस्ट, बट क्योंकि पुअर मैन्स हिमाचल इज उत्तराखंड, तो हम भीमताल के एरिया में घूमते रहते हैं. दैट इज आवर पेट पीव. एंड वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज इन द country is Udaipur. We've been there so many times, and each time we go, we love it even more. So it's a beautiful city. As a place in general, I love Goa for not what Goa usually is. So I love the Goa that most people don't know of. I love the lazy, laid back, no party, away from the hustle bustle Goa. I love the Goa in monsoons, जब सब कुछ बंद होता है और सिर्फ हरा होता है पूरा स्टेट.
and you can just walk in the rain and do whatever. So that's great. Internationally, I love the US. I think it's such a terrific country, and I haven't traveled a lot, but jitna bhi maine travel kiya US mein, East Coast, West Coast, I've always enjoyed it. I loved Japan. It was like Leh Ladakh. It was like मैं कहाँ आ गया? Like ये जगह धरती पे कैसे हो सकती है? It was just such an unbelievable experience where both tradition and modernity was intertwined in a way that I couldn't even wrap my head around. And it was brilliant. Like Tokyo was mind blowing. And Tokyo is the only place I've been to in Japan. So I haven't even explored anything else. And we usually, like for the last few years before COVID, we've made trips to Europe, which is always really nice. The one place that I would love to go to, which we haven't been able to, is national forests. So Masai Mara in Kenya is one of our places to go. And the other one is New Zealand. That just looks out of the world. मैं आपको एक ट्रैवल का एक वो रेकमेंड कर सकता हूँ जगह, क्योंकि आपने बताया आप ऑरोविल और पौंडीचेरी टीम को लेके गए थे. हमने हमारा एक रिट्रीट किया था क्रिसमस के अराउंड. सो हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है पुलगा. पार्वती वैली का लास्ट विलेज है. सो लोग सारे कसौल में रुक जाते हैं, तो अच्छी बात है वो कसौल में रुक जाते हैं. हम और आगे जाएंगे. That is brilliant. And पुलगा पहुंचने में कितना टाइम लगता है? दिल्ली से लगता है, दिल्ली से कितने घंटे लगेंगे? 12 to 14 hours. चंडीगढ़ से इट्स अबाउट 10 hours. सो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहा, बट लाइक मैं अब जल्दी से आपसे एक मिसलेनियस रिकमेंडेशन लेना चाहता हूँ इन रिगार्ड टू इंस्पिरेशन. जब हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं, एक बार मूवीज और टीवी शोज की भी बात कर लेते हैं. विच आर दोस मूवीज एंड टीवी शोज दैट यू रियली लाइक? आपकी कोई फेवरेट्स है या द वन दैट लाइक यू वांट टू वॉच टू गेट इंस्पायर्ड? मूवीज बहुत सारी हैं. So my usual go-to movies is the entire Dark Knight series. I loved that trilogy. I loved the movie Interstellar. I loved Dil Chahta Hai because that was just something growing up was like, boss, ये जिंदगी अगर मिल जाए तो जिंदगी बस सफल हो गई. I love the movie Lakshya. I love the movie Wake Up Sid. The movie that I can watch for inspiration at any point of time and feel inspired is the Shawshank Redemption. वो एक ऐसी मूवी है जो किसी भी पॉइंट पे जितनी बार भी देख लूं, it just leaves me with the right dose. एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, इंडिया में which are those creators that you find really interesting? I like what Abhi and Niu do. I really like their packaging and everything. I really like Akshat Srivastav in finance. Pranjal Kamra, who have been doing some really good work. I have very high respect for Rachna Ranade for how well she has done everything. I admire Aman Datarwal for how he has gone about his entire thing. Ranveer, of course. Tanmay, because he's a good friend, and I know how hard it has been for him and to come back from his first innings and just do commendably so well in his second innings as well, both as a streamer and as personal finance and so on. Prajakta for the work that she does, which is just being herself. So it's really nice. जब तन्मय हमारे चैनल पे आए थे, उनके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ था वेयर ही सेड कि मैं बहुत बार सोचता हूँ कि अगर मैं पोस्ट इकोनॉमिक जब बन गया तो अब मैं लाइफ में क्या करूँगा. And that is something I also want to ask you, because मेरे को लगता है after the success of your recent book also and like the success you have seen in the last few years, have you reached a stage where you are post-economic? And अगर आंसर हाँ या ना दोनों है, so कैसे आपको लगता है after being post-economic life change होती है और आपके साथ वो कैसे हो रही है? The reality is जिंदगी में पहली बार पैसा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी अभी तक बहुत मुश्किल से बीती है या पैसे की वजह से हम जिंदगी जी नहीं पाए हैं. तो thankfully my wife and I are of the same ideology that money can never rule us. To be truly happy, you surprisingly don't need a lot of money, and whatever that money is, I can easily earn that. When COVID had just started, we weren't sure of all this thing that will happen to me in my content creation journey and everything. We were staring at 5 months of bank balance in our bank, क्योंकि मेरी जो सारी wealth है वो Nearbuy की equity में जुड़ी हुई है. I don't have liquid cash. तो घर चलाने के लिए जो भी पैसा चाहिए, घर की EMI, बच्चों की फीस, blah 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 blah, उन सब चीजों के लिए हमारे पास 5 महीने का पैसा था. And we had to find either an income source in the next 5 months or we discussed and we said हम अपना घर बेच देंगे,
घर बेच के हमें कुछ 40-50 लाख रुपए मिलेंगे, उस 40-50 लाख रुपए से हम किसी पहाड़ के गांव में जाएंगे, वहां बच्चों को पढ़ाएंगे, एज इन दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे किसी स्कूल में, और अपने बच्चों को होम स्कूल करेंगे एंड वहीं रहेंगे, वही हमारी जिंदगी होगी. एंड इट वाजंट अ क्रेजी थॉट, इट वाज अ वेरी viable, legit thought in our head. So what I love about the fact about me is I am not married to any economic status or illusion of money that I need to go after. So the answer is, am I beyond money now? Yes, I have way more money than I need to. Does that mean that अगर ये सारा पैसा चले जाएगा तो फट जाएगी? No. ब्यूटिफुल. दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी, जो नवल ने एक चीज, एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत की मेरे को एक लाइन याद आ रही है कि उन्होंने जब लिखा था, द थिंग विद वेल्थ क्रिएशन इज दैट एक बार आप सीख लेते हो ना, फिर अगर आपका कोई सारा पैसा भी ले लेना, इट टेक्स 2 weeks टू रिक्रिएट इट. इज दैट ट्रू? It is. His famous thread on how to get rich without getting lucky is orchestrated on the same thing. Ki if in a different universe, in a different era, you are thrown in with nothing but just the knowledge of what you have, will you be able to get wealthy again? And the answer should be yes. Creating wealth is a science. It's also art and it's also luck, but it is largely a science of how you approach it. And agar wo aa jaye to fir aa jata hai. And it's, again, as I say, it is crazy how little we actually need to live in the world. हमारी जो पूरे फाइट पैसे के साथ लेके होती है, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें वो पैसा जीने के लिए चाहिए, वो इसलिए होती है क्योंकि हमें वो पैसा दुनिया को दिखाने के लिए चाहिए कि हम अच्छे से जी रहे हैं. And the day we drop that, we are free. Also, before we go, I want to acknowledge, I think Ankur and I have the same lamp. Oh. Seems like it, yes. यही Amazon 1800 रुपए वाला लैंप आपने भी लिया था. वाह. Though if you allow me, the kid in me is going to change colors. What I did was I put up a smart lamp on this, and it's ironic because I'm colorblind. तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखता, मुझे सिर्फ दिखता कि ये नीला है और ये पीला है, and that's it. और कोई रंग हरा लाल मुझे नहीं दिखता. So, आप recommendation देना चाहती हैं वानी अंकुर को कोई? Yeah, there is this children's book called The Little Prince, and we make it compulsory for everyone on the channel to read. Is that something that I should read, or? It is a great children's book for adults. I have a show recommendation for you. हो सकता है शायद आपने already देख लिया, अभी Apple TV पे एक नया शो है, which is called Severance. Severance में एक universe दिखाया है जहाँ पे थोड़ा सा डिस्टोपिक यूनिवर्स है, जहाँ पे एक इंसान अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग कर सकता है. और वो कैसे कर सकता है, उसके दिमाग में एक चिप चली जाएगी जिससे वो जब भी अपने काम पे जाएगा उसको अपनी पर्सनल लाइफ की कोई मेमोरी नहीं रहेगी, और जब वो घर आएगा उसको अपनी वर्क लाइफ की कोई मेमोरी नहीं रहेगी. सो अ पर्सन इज लिविंग 2 different lives, and how it really fucks with the whole society when people start getting severed. तो लोग एक प्रोसीजर कराते हैं इस यूनिवर्स में, जिनको अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ पूरी अलग करनी है, तो they get severed. On this concept, Apple has made this 10 on 10 show which is called Severance, and I would strongly recommend it. Severance. Perfect. I know हम बुक्स के बारे में इतनी बात नहीं कर पाए, बट आई थिंक आपने बुक्स के बारे में इतने वीडियोस बनाए हैं और हम उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे. सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट सम न्यू थिंग्स विद यू, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, is there anything that we might have missed that you would like to talk about? No, this was a good conversation. Yeah, very different from what I usually have. So thank you for facilitating that. As you would have all seen, this was a really fun conversation, and ये fun conversation सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे और interesting लोगों के साथ होती रहेगी. So if you liked this video and all the ones that Vaibhav and Vaani have already shared, then please subscribe to Chalchitra Talks.